क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और इसका जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म। A prism is a solid, homogeneous, transparent and refracting medium bounded by two plane surface inclined at an angle यानी ये सॉलिड है, होमोजेनियस, हर जगह ये रिफ्लेक्ट होंगे, ट्रांसपेरेंट, लाइट पास होते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम बिटवीन टू प्लेन सरफेस। सपोज ये एक प्रिज्म है, reflecting surfaces A, B, C is a prism. A, B and AC are reflecting surface. Suppose let PQ be the incident ray. Let PQ be the incident ray. जब PQ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB पर पड़ेंगे, यहाँ एक हम नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस रियर से डेंसर की तरफ ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रे हो जाएगा, यानी Q और इसके बाद QR से ये reflecting surface RS, यानी PQ, let PQ be the incident ray, QR be the refracted ray and RS be the emergent ray. Let N1O and N2O, यहाँ भी एक नॉर्मल हम डालेंगे, N1O and N2O be the two normals. Let N1O and N2O be the two normals at point Q and R respectively. In the figure, angle I be the angle of incidence, R1, R2, यहाँ हम दो एंगल लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल E is the angle of emergence. When the emergent ray is produced backward, it meets the incident ray. This incident ray PQ, it meets the incident ray at point D. Then suppose EDR is called angle of deviation. ABC is a prism. Let PQ be the incident ray, QR be the refracted ray, and RS be the emergent ray. Let N1O and N2O
be the two normals at point Q and R respectively. In the figure, angle I is called, angle I be the angle of incidence, R1 and R2 be the angle of refraction, and angle E be the angle of emergence. When the emergent ray is produced backward, it meets the incident ray is PQ, it meets the incident ray at point D, then EDR is called the angle of deviation. अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ angle of deviation, from the figure यहाँ हम सपोज ये जो एंगल आई है इसका अपोजिट एंगल ये सारा है, यहाँ मैं एंगल लूँगा डेल्टा 1, यहाँ डेल्टा 2, यानी डेल्टा 1 प्लस R1 जो है वो इन दोनों का सम I1 के बराबर है. हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर we have delta 1 plus R1. Delta 1 plus R1 is equal to I, or this implies delta 1 is equal to I minus R1. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे. Also यहाँ भी लिख सकते हैं delta 2 plus R2 is equal to E. Also delta 2 plus R2 is equal to E, or delta 2 is equal to E minus R2. इसको हम सेकंड रखेंगे. इसके बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल DQR, इन ट्रायंगल DQR, इन ट्रायंगल DQR, ये ट्रायंगल हम लेंगे DQR. इन ट्रायंगल DQR we have DQR. इन ट्रायंगल DQR यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल है ये हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. इन ट्रायंगल DQR we have delta is equal to delta 1 plus delta 2, delta 1 plus delta 2. Substitute, put the value of delta 1 and delta 2 in equation from first and second. Put the value of delta 1 and delta 2 from first second in equation first. यानी ये जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में देंगे. यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 के बदले हम लिख सकते हैं I माइनस R1 प्लस इंटू डेल्टा 2 के बदले E माइनस R2. यानी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस इंटू R1 प्लस R2, I1 प्लस R2. यानी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस इंटू R1 प्लस R2. इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इससे आगे करेंगे.